Good morning students, welcome again here in this video tutorial. As you all of you know that we are discussing our chapter number 8. Which chapter we are discussing? Yes, we are discussing our chapter number 8 from Geography, Human Environment Interactions, the Tropical and the Subtropical Regions. As you all of you know that this is your lecture number 2. Which lecture number? This is lecture number 2 of the chapter 8. In lecture number 1, I have already explained about life in the Amazon basin. So, the tropical region lies very close where the equator between 10° north and 10° south. So, it is referred to as the equatorial region. We already discussed about climate and rainforest and people of the rainforest in the Amazon basin. So student, now let's continue our chapter with topic Ganga Brahmaputra basin or life in the Ganga Brahmaputra basin. So the tributaries of river Ganga and the Brahmaputra. आपको पता है आपके यहाँ से रिवर आती है, मेन रिवर गंगा एंड हियर ब्रह्मपुत्र. सो इनके साथ की जो ट्रिब्यूटरीज होती हैं दे टुगेदर फॉर्म द गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट. जो आपका हमारा इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, सो हमारी गंगा एंड ब्रह्मपुत्र रिवर्स के साथ मिलके उनकी ट्रिब्यूटरीज क्या फॉर्म करती हैं? गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट. जस्ट लुक एट द मैप ऑल्सो हियर. सो आपका ये बेसिन पूरा यहाँ से यहाँ तक कवर होता है. ये कौन कौन सा पार्ट आपका पूरा कवर करता है? उत्तराखंड हो गया आपका, देन आपका उत्तर प्रदेश हो गया, देन आपका बिहार, देन झारखंड का भी कुछ पार्ट, देन वेस्ट बंगाल है, और आपका थोड़ा पार्ट इसका नेपाल में भी हल्का. देखिए आप जस्ट लुक एट द मैप हियर वेरी केयरफुली. नेपाल में भी आपका कुछ पार्ट इसमें कवर होता है. देन जो आपके नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं यहाँ, इन स्टेट में भी. सो आपका ये एरिया जो है, जस्ट लुक एट द मैप हियर बेटा, गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन. एंड सो द बेसिन लाई इन द सब ट्रॉपिकल रीजन. कहाँ ये लाई करता है बेसिन? सब ट्रॉपिकल रीजन में. कौन से रीजन में? सब ट्रॉपिकल रीजन में आपका लाई करता है ये बिटवीन 10° नॉर्थ. कहाँ से कहाँ तक आपका? 10° नॉर्थ टू 30° नॉर्थ लैटिट्यूड्स. वेयर this is important beta, the Ganga Brahmaputra basin lie in the subtropical region that is situated between where? Yes, between 10° north to 30° north latitude. The tributaries of the river Ganga. जो आप देखिए रिवर्स गंगा की यहाँ से ट्रिब्यूटरीज है. आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन अबाउट ट्रिब्यूटरीज ऑल्सो. क्या होते हैं आपके ट्रिब्यूटरीज? जो स्मॉल रिवर होती हैं और वो मेन रिवर को आके ज्वाइन कर देती हैं. सो द ट्रिब्यूटरीज ऑफ रिवर गंगा लाइक द घाघरा, द सन, द चंबल, द गंडक, द कोसी एंड द ट्रिब्यूटरीज ऑफ ब्रह्मपुत्र ड्रेन इट. किस किस की ट्रिब्यूटरीज? गंगा रिवर की ट्रिब्यूटरीज एंड किसकी? आपकी ब्रह्मपुत्र रिवर्स की ट्रिब्यूटरीज क्या फॉर्म करती हैं? गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा. The plains of the Ganga and the Brahmaputra. किसके plains? Yes, Ganga and Brahmaputra. The mountains and the foothills of the Himalayas. जो आपके mountains हैं किसमें और foothills किसके हैं? हिमालयाज के. And the Sundarbans Delta are the main feature of this basin. आपके क्या हो गए? गंगा एंड ब्रह्मपुत्र के जो प्लेन है, ठीक है, वो आपके इसमें बहुत मेन फीचर्स हैं इस बेसिन के. द माउंटेन एंड द फुट हिल्स ऑफ द हिमालयाज. कौन से माउंटेन्स? यस, और उसके फुट हिल्स जो हिमालयस के. एंड दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग बेटा, सुंदरबंस डेल्टा. सो लार्जेस्ट डेल्टा इन द वर्ल्ड. यस, विच डेल्टा? सुंदरबंस डेल्टा आर द मेन फीचर्स ऑफ दिस बेसिन. ऑक्सबो लेक्स डॉट द प्लेन एरिया. ऑक्सबो लेक्स मैंने आपको बताया था कि मान लीजिए आपकी एक रिवर आ रही है इस तरह करके, इस तरह करके. देन आफ्टर दिस जो रिवर्स का ये पार्ट है, ये आपका क्या हो जाता है? कट हो जाता है, एक अलग अपना लेक बना लेते हैं. तो वो कौन सा होता है? वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन आवर प्रीवियस चैप्टर ऑल्सो. ऑक्सबो लेक. विच लेक्स? ऑक्सबो लेक्स. सो ऑक्सबो लेक्स डॉट द प्लेन एरिया.
द एरिया इज डोमिनेटेड बाय मॉनसून क्लाइमेट। क्या वो होता है इस एरिया में जो आपका गंगा ब्रह्मपुत्र जो बेसिन है आपका, मॉनसून क्लाइमेट। कैसा क्लाइमेट यहाँ होता है आपका? मॉनसून क्लाइमेट। द मॉनसून ब्रिंग्स रेन फ्रॉम मिड जून टू मिड सेप्टेम्बर। एंड व्हेन मॉनसून ब्रिंग्स रेन, यस, द मॉनसून ब्रिंग्स रेन फ्रॉम मिड जून, व्हेन, यस, mid June to mid September. The summers are hot and the winters cool. So the climate of the Ganga Brahmaputra basin, the summers are hot. Summer कैसे होते हैं बेटा? The summers are hot and the winters cool. The basin area has varied topography. Topography क्या होता है बेटा? अभी मैंने I have already explained ना कि क्या है कि यहाँ आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। यहाँ आपको प्लेन्स भी मिल जाएंगे, द प्लेन्स ऑफ द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र। देन आफ्टर दिस द माउंटेन्स, आपको माउंटेन्स भी देखने को। देन सुंदरबन डेल्टा। सो अलग अलग आपको पूरे वैरायटी देखने को यहाँ आपको इस बेसिन में मिल जाएगी। द एनवायरमेंट प्लेज अ डोमिनेट रोल इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पॉपुलेशन। सो मेन इसका क्या है, एनवायरमेंट जो है काफ़ी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्ले करता है। क्या इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपका वहाँ का एनवायरनमेंट, कि एनवायरनमेंट कैसा है। सो दैट्स वाई द एनवायरनमेंट प्लेज अ डोमिनेंट रोल इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पॉपुलेशन। द माउंटेन एरियाज विथ स्टीप स्लोप्स हैव inhospitable terrain, so therefore less number of people live in the mountain area of the गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन। पता है आपको जो बेटा ये बेसिन है गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन का, इसका जो एरिया है माउंटेन एरिया। So therefore that's why, that's the reason less number of people live in the mountain area of the Ganga Brahmaputra basin. So population density आपकी क्या होती है? It means the number of person that live in the 1 square kilometer. But yes, the number of the people that live in the 1 square kilometer of area. Example, you can take an example also, the population density of Uttarakhand. आपको पता है population density of Uttarakhand की कितनी है? 189. Yes, I am talking about 1 square kilometer. Okay, so the density of the Uttarakhand is 189, while the density of West Bengal is 1029, and that of Bihar is 1102. The plain areas provide the most suitable land for human habitation as compared to mountain area. अगर हम compare करें between mountain area and plain area, which area provide most suitable land for human habitation? क्या provide? कौन सा? Which one? Yes, the plain area. Which area as compared to mountain area? You can say that the plain area provide the most suitable land for human habitation. The soil is fertile. So that's why the main reason is because of the soil of the plain region. आपका जो plain area है, plain area की soil कैसी होती है? Soil कैसी होती है आपकी? Fertile. So that's why agriculture is the main occupation of the people where flat land is available to grow crop. So flat land available आपका वहाँ available है, and soil is also fertile. So due to these reasons, the main occupation of the people where flat land is available to grow crops. So the density of the population of the plains is very high. So that's why वहाँ की density कैसी होगी population की? plains में। माउंटेन्स में तो आपकी कम होगी, बट अगर हम बात करें प्लेन्स की तो आपकी पॉपुलेशन प्लेन्स में कैसी होगी? वेरी हाई। द मेन क्रॉप इज पैडी, विच यस कल्टिवेशन ऑफ पैडी रिक्वायर्स सफिशिएंट वाटर। आपको पता है मेन क्रॉप क्या है? पैडी। पैडी मीन्स धान की खेती। यस, द मेन क्रॉप इज पैडी सिंस कल्टिवेशन ऑफ पैडी रिक्वायर्स सफिशिएंट वाटर. It is grown in the areas where the amount of rainfall is high. So आपकी वहाँ amount of rainfall कैसी है? High है. So that's why the main crop is paddy. Wheat, which one? Wheat, maize, sorghum, gram and millets are the other crops that are grown. Which are the other crops that are grown in Ganga Brahmaputra basin? Yes, wheat, maize, sorghum, gram and millets. Cash crops. Which crops? Cash crops, or in Hindi you can say that nagdi fasal. Cash crops like sugarcane and jute are also grown. Which one? Cash crops आपके also grown there in Ganga Brahmaputra basin. Which one? Sugarcane and jute.
Banana plantations are seen in some areas of the plain. In the plains of that region, banana plantation are also seen. In West Bengal and Assam, where, yes, I'm talking about beta, which one? West Bengal and Assam. Tea is grown in plantation, which tea, as you can see, just look at here. In this picture, tea garden in Assam. So, in West Bengal and Assam, tea is grown in plantations. Silk is produced through the cultivation of silkworm in parts of where Bihar and Assam. Silk also produced there through the cultivation of silkworm. As all of you know that silkworm, yes, cultivation of silkworm in parts of Bihar and Assam. In the Ganga and Brahmaputra plain, tropical deciduous trees. Which trees? Yes, tropical deciduous trees grow along with teak, sal, and people. Thick bamboo groves are common in the Brahmaputra basin. Which groves are common in the Brahmaputra basin? Thick bamboo groves. The delta area is covered with the mangrove forest. कौन से फॉरेस्ट से आपका डेल्टा पूरा एरिया कौन से उससे कवर होता है? मैनग्रोव फॉरेस्ट. कौन सा? सुंदरबंस डेल्टा. इन पार्ट्स ऑफ उत्तराखंड, सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश, coniferous trees like pine, deodar, and fir can be seen because the climate is cool and the slopes are steep. Which parts? Yes, of this basin, Uttarakhand, Sikkim, and Arunachal Pradesh. Which part of this basin? Yes, Uttarakhand, Sikkim, and Arunachal Pradesh. Coniferous tree. Which trees? Yes, coniferous trees. Like examples of coniferous forest are pine, deodar, and fir. कौन से आपके trees हैं which found in coniferous forest? Pine, deodar, and fir can be seen because, why? What's the reason? Because the climate is cool and the slopes are steep. There is a variety of wildlife in the basin. Elephants, tigers, deer, and monkeys are common. In this basin, you can see a variety of wildlife. Yes, variety of wildlife in the basin. So some examples, or you can say that some animals just like elephants, tiger, deer, and monkeys are common. This is very important, beta. The one-horned rhinoceros. Which one? The one-horned rhinoceros is found in the Brahmaputra plain. Which one-horned rhinoceros आपका यहाँ है? Brahmaputra plain में. In the delta area, Bengal tiger, crocodiles, and alligators are found. Yes, some other animals you are also you can see in here. Which one? Bengal tiger, crocodiles, and alligators. Aquatic life abounds. Which one? Yes, aquatic life abounds. Yes, because many rivers are also found there. So aquatic life abounds in the fresh river water, the lakes, and the Bay of Bengal Sea. The most popular varieties of the fish are the rohu. Which one? Rohu, katla, and hilsa. Fish and rice is the staple diet of the people living in the area. Which one? Fish and rice is the staple diet. Basic diet जो वहाँ के लोग follow करते हैं. Which one? Fish and rice is the staple diet of the people living in the area. Just look at the here also, beta. Two pictures given in your book. One-horned rhinoceros. As you all of you know that the one-horned rhinoceros is found in the Brahmaputra plain. It is also famous all over the world. And here also crocodiles pictures given here. Now let's come here. Do you know one important thing also given in your book? In the freshwater river Ganga and river Brahmaputra, where freshwater of river Ganga and river Brahmaputra, a variety of dolphin locally called susu. Yes, it also called blind dolphin. Yes, which dolphin? It's also called blind. फ्रेश वाटर में ही मिलती है आपकी ये डॉल्फिन बेटा. द प्रेजेंस ऑफ सुसु, और यू कैन से दैट कि द प्रेजेंस ऑफ ब्लाइंड डॉल्फिन is an indication of the health of the river. Yes, because this dolphin is only found in the fresh water. Where? Yes, fresh water. So that's why you can say that the presence of this dolphin is an
indication of the health of the river. The untreated industrial and urban waste with the high amount of chemicals are killing this species. Nowadays many chemicals and wastage of factories are throwing. आप देख रहे हैं कि फैक्ट्रीज में से और केमिकल्स सब रिवर्स में थ्रो कर दिया जाता है, वेस्ट को है. सो दैट्स वाई ये जो आपकी स्पीसीज है ब्लाइंड डॉल्फिन और सुसु, so that's why due to what? Due to untreated industrial and urban waste with the high amount of chemicals are killing this species. Now let's come here. One important thing also, terrace farming. Terraces are built on the steep slopes to create flat surface on which crops are grown. आपको पता है कि वहाँ का एरिया पूरा कैसा होता है, स्टीप स्लोप्स में होता है. सो जब इन स्टीप स्लोप्स के जो क्या है सरफेस को फ्लैट बना के वहाँ आपका क्या किया जाता है, क्रॉप्स को ग्रोन किया जाता है. यहाँ इस तरह पूरा फ्लैट कर दिया जाता है. एज यू कैन सी हियर ऑल्सो, जस्ट लुक एट हियर. वाई? बिकॉज द वाटर डज नॉट रन रैपिडली. और यहाँ इस एरिया में आपकी क्या हो जाए, क्रॉप्स जो है ग्रोन हो जाए. सो इट्स कॉल्ड टेरेस फार्मिंग. The Ganga Brahmaputra plains has several big towns and cities. Yes, several big towns and cities. The cities of Allahabad, Kanpur, Varanasi, Lucknow, Patna and Kolkata, all with the population of more than 10 lakhs are located along the river Ganga. Yes, how much? Yes, more than 10 lakhs are located along the river Ganga. Just look at the figure 8.13 also. वाराणसी along the river Ganga, जो मेन रिवर है वहाँ की गंगा, उसके साथ ही आपकी कई मेन रिवर्स भी वहाँ है. Just like cities of Allahabad, you can say that Kanpur, Varanasi, Lucknow, Patna and Kolkata. Then the wastewater from these towns and industrial is discharged into the rivers. This leads to the pollution of the rivers. Nowadays, as you know that की population are growing nowadays day by day. आपकी population काफ़ी grow हो रही है. So in areas के जो waste water है and factories and towns के, so is discharged into the rivers. So this leads what? This leads to the pollution of the river. What it leads? Yes, it leads to the pollution of the river. All the four ways of transport are well developed in the Ganga Brahmaputra basin. Yes, four ways of transport: water transport, in the plain areas, the roadways and railways transport also the people from where one place to another. Which one? In the plain areas. कौन से आपके plain areas में roadways हैं and railways transport also. So because of people from one place to another. Waterways also is an effective means of transport. Which one? Waterways is also an effective means of transport, particularly along the river. Kolkata is an important port on the river Hooghly. Where? In which river? Yes, important port on the river Hooghly. The plain area also has a large number of airports. Tourism is another important activity of the basin. Which is another important activity of this basin? Yes, tourism is another important activity of the basin. Taj Mahal of the bank of river Yamuna in Agra. सबको पता है ताज महल. And where it is situated? Yes, it is situated where? River Ganga, Yamuna in Agra. So Taj Mahal on the bank of river Yamuna in Agra. Allahabad on the confluence of the river Ganga and Yamuna. Buddhist stoops and Uttar Pradesh and Bihar. Which stoops? Yes, Buddhist stoops and Uttar Pradesh and Bihar. Lucknow with its Imambara. Assam with Kaziranga and Manas with wildlife sanctuaries. Some important wildlife sanctuaries also situated there. Which is one? Assam with Kaziranga and Manas with wildlife sanctuaries, and Arunachal Pradesh with a distinct tribal culture are some of the places worth a visit. Many places are here to worth a visit for tourism purpose also. So that's why you can say that tourism is another important activity. Just look at the figure 8.14 here. Just better look at here. Tiger in the Manas wildlife sanctuaries. Many wildlife sanctuaries also here. National parks also, you can say that wildlife sanctuary situated here. Which one?
Yes, Assam with Kaziranga. Which one? Assam with Kaziranga and Manas with wildlife sanctuaries and in Arunachal Pradesh. So for today, beta, that's it. Thank you all of you. Have a nice day ahead.